सबवे बंद असल्या कारणानं वाहतूक जी आहे ठाण्याकडून येणारी ती आपण मुख्य रस्त्यावरून साईडचे जे 2 लेन आहेत, सर्व्हिस लेन आणि शोल्डर, त्याच्यावरून ते ट्रॅफिक काढतो आहे. 4 अधिकारी आणि 20 अंमलदार या ठिकाणी वाहतूक नियमनासाठी लावलेले आहेत. कुठंही वाहतूक बंद नाही आहे, परंतु वाहतूक स्लो आहे आणि येणारी जी वाहतूक आहे किंवा जाणारी ठाण्याकडे जाणारी वाहतूक आहे, शिळपाट्याकडे जाणारी वाहतूक आहे, त्याचं नियमन व्यवस्थितपणे चालू आहे. त्याचबरोबर महानगरपालिकेचे काही अधिकारी आहेत, काही कर्मचारी आहेत की जे सबवेमध्ये जे आहे आणि अंडरपासमध्ये जे पाणी साठलेलं आहे त्याच्यासाठी पंप आणि त्याची व्यवस्था करून ते पाणी काढायचा प्रयत्न करत आहे. आता थोडासा पाऊस जो आहे तो कमी झालेला आहे, पण बंद नाही झालेला, पण वाहतूक जी आहे ते खूप स्लो प्रमाणामध्ये या रोडवरून चालू आहे. कशा प्रकारे परिस्थिती होते ही वाहतूक निसर्गाला म्हणजे हँडल करताना? आता प्रशासनाचे महानगरपालिका असेल, पोलीस असेल, हे सर्व या ठिकाणी उभं राहून एकमेकांच्या मदतीला धावून येत आहेत. त्याचबरोबर काही पब्लिकसुद्धा या ठिकाणी पोलिसांना मदत करण्यासाठी, वाहतूक नियमन करण्यासाठी येत आहेत. हे सुद्धा खूप आनंदाची आणि चांगली गोष्ट आहे की लोकांनासुद्धा अशा वेळी मदत करायची त्यांची भूमिका राहते. कराल घराबाहेर न पडण्यासाठी तर ज्यांना सुट्टी आहे त्यांनी प्रवास टाळावा, कारण त्याच्यामुळे अनावश्यक ताण वाहतूक व्यवस्थेवर पडतो. असं कुठं रस्ता बंद नाही आहे, पण वाहतूक सुरू आहे. शक्यतोपर्यंत आवश्यक नसेल तर थोडंसं रेस्ट्रिक्ट करावी मूवमेंट, म्हणजे पाणी ओसरल्यानंतर वाहतूक सुरळीत चालू राहील, मग बाहेर पडायला हरकत नाही. काय पर्यायी मार्ग काढले आहेत का या माध्यमातून? आता रबाळे टी पॉईंटला पाणी साठलेलं आहे, तिथं वाहतुकीची अडचण होऊ नये. आणि पटणी सर्कलच्या ठिकाणी, पटणी ग्राउंडच्या त्या ठिकाणी तिथंसुद्धा अंडरपासखाली, रेल्वे अंडरपासखाली पाणी साठलेलं होतं. तर वाहतूक जी आहे ती पटणी ग्राउंडवरून रबाळे ट्रॅफिक युनिटकडं आणि मुलुंडकडं तिकडून डायव्हर्ट केलेली आहे. आता तीसुद्धा वाहतूक सुरळीत करायचे प्रयत्न चालू आहे. नक्कीच आपण पाहिलं आहे की DCPने सांगितलेलं आहे पर्यायी मार्ग देखील या ठिकाणी उपलब्ध केलेले आहेत आणि अधिकारी म्हणा, पालिकेचे कर्मचारी म्हणा, नागरिक देखील यासाठी सज्ज झालेले आहेत पाणी उपसण्यासाठी. नवी मुंबईमध्ये संततधार पडणाऱ्या पावसामुळे आपण या ठिकाणी पाहू शकता घनसोली येथील अंडरपास पूर्ण जलमय झालेला आहे. पूर्ण गुडघ्या इतकं पाणी या ठिकाणी साचलेलं आहे आणि हा अंडरपास वाहतुकीसाठी बंद देखील करण्यात आलेला आहे. आपण पाहू शकता लांबच लांब रांगा या वाहनाच्या लागलेल्या आहेत. या वाहनांच्या वाट ही ट्रॅफिक पोलिसांच्या माध्यमातून काढण्यात येत आहे. ठिकठिकाणी ट्रॅफिक पोलीस देखील सज्ज झालेले आहेत. आपण पाहू शकता गुडघ्या इतकं पाणी या ठिकाणी साचलेलं आहे आणि या ठिकाणी प्रवास देखील बंद करण्यात आलेला आहे. आणि या ठिकाणी चारी बाजूनी तुम्ही बघू शकता अंडरपासच्या वरच्या इथून वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागलेल्या आहेत. पालिका म्हणा, ट्रॅफिक हवालदार म्हणा, ट्रॅफिक ही मोकळी केली जात आहे. आत्ताच या ठिकाणी एक 4 चाकी गाडी देखील अटकली होती. टोईंग व्हॅनच्या माध्यमातून ती गाडी काढण्यात येत आहे. ट्रॅफिक हवालदार यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी जो कचरा आहे, गाळ आहे, तो निचरा काढण्यात येत आहे. आपण पाहू शकता त्या गुडघ्या इतक्या पाण्यामध्ये ते उतरले असून तो गाळ या ठिकाणी काढण्यात येत आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट राहुल कदमचा प्रियाजवांचा रिपोर्ट, नवी मुंबई.
विभाग के पूर्व नगर सेवक रविंद्र मात्रे पिछले 4 दिनों से आंदोलन पर बैठे हुए हैं, लेकिन महानगर पालिका की तरफ से उनके आंदोलन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और ना ही उनकी मांगों पर कोई जवाब दिया जा रहा है। आज वो देखिए इस जो गार्डन में पानी भरा था उसमें क्या कर रहे हैं, आइए उनसे पूछते हैं। सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मच्छी पकड़ रहा हूँ। इसमें मच्छी है क्या? हाँ, क्या है, देखो पकड़ा हम लोग आज। अच्छा, ये देखो, तो मच्छी पकड़ा। इतना मच्छी कैसे आ गया, मतलब पानी कहाँ से है? अभी ये तालाब हो गया इधर, ये उद्यान है महानगर पालिका का, इसमें उद्यान, और ये उद्यान में भी मच्छी पकड़े तालाब के जैसा परिस्थिति हो गया है। ये हमेशा ऐसा ही होता है? हाँ, ऐसे होता है, हमेशा वैसे होता है। बच्चे लोग को देखो खेलने के लिए जगह है, पर वो मच्छी पकड़ रहे हम लोग। बच्चे लोग भी तैरता है ये पानी में। आपने पालिका में कंप्लेन किया था, पालिका से कुछ रिप्लाई आया? कुछ नहीं अभी तक है। ओके, हमारे इनकी मोदी साहब है। शिवसेना जिला संगठक एम.के. मडवी जी हमारे साथ आ गए हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि किस तरह से, देखिए उनके सामने मछली पकड़ी। सर ये देखिए मछली पकड़ी गई है तालाब में, तालाब बन गया जो गार्डन है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि हमारे जो उप जिला प्रमुख जो रविंद्र मात्रे साहब है, वो जनता के लिए लड़ रहे हैं, और जनता के लिए लड़ते वक्त देखिए सामने बच्चे लोग भी है। इस तरह से अगर गार्डन की हालत होगी तो बच्चे लोग कहाँ पे खेलेंगे, कहाँ पे भागेंगे? आज के सिचुएशन में बच्चे लोगों को, जो हमारे ज्येष्ठ नागरिक है, उसके अलावा हमारे माता बहनें हैं, इन लोग को एक अच्छे तरह से गार्डन होना चाहिए। इस गार्डन की दुरावस्था देखेंगे तो कोई भी आकर, बहुत बड़ी हमारे कॉर्पोरेशन के लिए, नई मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शर्म की बात है। और मैं स्पेशली बोलूंगा कि आज के पीरियड में हमारे नई मुंबई कॉर्पोरेशन का सबसे अगर थर्ड क्लास कोई डिपार्टमेंट होएगा वही गार्डन विभाग। सब जगह में यही परिस्थिति है। हमारे ऐरोली के अंदर, पूरे नई मुंबई के अंदर आज के पीरियड में अगर गार्डन की अवस्था देखोगे, इससे पहले कॉर्पोरेशन में अगर गार्डन की देखना है तो नई मुंबई में आइए, इस तरह से कहा जाते थे। आज जो परिस्थिति है, दुर्भाग्य है कि पूरे गार्डन का पूरा सत्यानाश करके रखे हैं, और कोई अधिकारी काम करते हुए दिखते नहीं है। अगर कुछ भी काम करने के लिए बोल देते हैं, वो उसके ऊपर उंगली दिखा रहा है, उसके ऊपर दिखा रहा है, उसके ऊपर मैं तैयार हूँ, वो नहीं, वो है तैयार है, वो नहीं है। इस तरह से हमारे पब्लिक का, नई मुंबई जो जनता टैक्स पेयर है, उनका पैसा ये लोग पूरा उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जो सुविधा पब्लिक को मिलना चाहिए वो पब्लिक को सुविधा नहीं मिल रही है। और मैं ये कहूंगा कि इसके पहले हमारे कॉर्पोरेशन के जो शुरू से अधिकारी थे, जिनको प्रमोशन हो गया, डेप्यूटी कमिश्नर हो गए, एडिशनल कमिश्नर हो गए, वो हम नई मुंबई का नागरिक हूँ, हमारे आने वाली पीढ़ी ही नई मुंबई के नागरिक है करके यहाँ पे अच्छे सुविधा देना चाहिए करके लोग काम करते थे। अभी देखा जाए तो नई मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सब अधिकारी प्रतिनियुक्ति पे आए हुए, प्रशासन के माध्यम से आए। उनको शहर का डेवलपमेंट करने में इंटरेस्ट नहीं है, उनको अलग इंटरेस्ट है। तो मैं ये कहूंगा कि जितना भी निषेध करूंगा उतना कम है। मेरी जानकारी के हिसाब से हमारे जो नई मुंबई कमिश्नर है शिंदे साहब, वो काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको, मेरी जानकारी के हिसाब से उनको ये लोग साथ नहीं दे रहे। आज नई मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर ये चीफ रहता है, मेन रहता है। अगर नीचे के अधिकारी अगर काम नहीं करेंगे तो ये हालत होने वाली है। तो ये सब फोटो आपके माध्यम से पब्लिक को भी बताएंगे और कॉर्पोरेशन में शिंदे साहब को भी बताएंगे। शिंदे साहब, इस तरह से अगर होगी हालत तो जितना पैसा खर्चा किया हो इसके पहले गार्डन के ऊपर, इससे आपको डबल पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो पब्लिक का पैसा, जनता जो टैक्स रुपये पैसा भरता है, उनका सब पैसा क्यों आप लोग बर्बाद कर रहे हो? ये शहर के लिए, कॉर्पोरेशन के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि जल्दी से जल्दी सरकार में अगर दम है तो इलेक्शन लेनी चाहिए। क्यों 6 साल इलेक्शन नहीं ले रहे? सब प्रतिनियुक्ति के अधिकारी आके नगर पालिका को पूरा क्या कर रहे हैं आपको मीडिया को भी पता है। तो इस तरह से शहर की अगर हालत खराब होगी तो हम जनता को आह्वान करेंगे कि कोई भी जनता कॉर्पोरेशन का टैक्स नहीं भरे। तो कोई भी जनता टैक्स ना भरे क्योंकि उसे बेसिक सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं, क्योंकि ये तो अस्तित्व की लड़ाई है। सर ना दोगे तो कमर जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ मैं पुरुषोत्तम गौजिया, आवाज टुडे, नई मुंबई।
नमस्कार, मैं हूं पंकज बेनवंशी और इसमें मौजूद हूं मैं नवी मुंबई के तलघर में। आपको बताना चाहूंगा कि 14 मई को एक घटना होती है जिसमें एक ड्राइवर की दोनों पैर गंवानी पड़ जाती है। उस घटना में जो महेश महतो नाम के ड्राइवर थे, उनके डॉक्टरों ने दोनों पैर काट दिए हैं। इसमें हमारे साथ देखो, आप देख सकते हैं कि ये ट्रक संगठन के लोग हैं यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, झारखंड संगठन के। हम डायरेक्ट इनसे जानेंगे जिनके साथ जो घटना हुई है, किस तरह से घटना हुई है और क्या उनकी डिमांड है और क्या हुआ था उस दिन। क्या हुआ था आपके साथ? वो 14 मई का एक्सीडेंट हुआ था 4 बजे सुबह। इसके दौरान हॉस्पिटल लेके गया, वहाँ से ट्रीटमेंट चालू किया। उसके बाद मेरा तो यहीं हम बेहोश हो गए थे, मेरा हाथ नहीं था। उसके बाद ट्रीटमेंट चालू था। उसके बाद जब डिस्चार्ज हुआ उधर से हॉस्पिटल से, उसके बाद सेठ इधर आ गए रूम पे। उसके बाद रूम के आने के बाद एक बार इसका बैंडेज के लिए गए। उसके बाद पैसा दिया, दूसरा बार गए, फोन किए तो मेहुल बोला कि बोल सेठ जिगर भाई से बात करो, मेरा से बात मत करो। उसके बाद हम जिगर सेठ का फोन किया तो बोला जाओ हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल से कॉल करना। उसके बाद हॉस्पिटल जाके जब ड्रेसिंग करा लिए, उसके बाद कॉल किया सेठ का पैसा के लिए, सेठ दवा लेना है। तो सेठ बोला, कुछ नहीं बोला, जैसे पैसा बोला वैसे कट कर दिया सेठ। उसके बाद उधर से हम लोग आ गए इधर, एक ड्राइवर लेके गए थे, वही पैसा दिया था। उसके बाद नाम बताओ। ट्रांसपोर्ट है SMP इंफ्रा। आप कितने साल से SMP इंफ्रा में काम कर रहे हैं? 2 साल प्लस है इसमें सर मेरा। सेठ का नाम बताओ। सेठ का नाम है जिगर भाई, जिगर सेठ। तो अभी आपकी क्या मांग है? एक आपका दोनों पैर कट गया है। मांग मेरा कुछ नहीं, 3 लड़की 2 लड़का है। इसमें मेरा अभी दवा के पैसा ये रोक दिया है। मेरा इसमें मांग है यही, अभी जब तक इंश्योरेंस नहीं पास होता है तब तक 10-15 लाख रुपया डिपॉजिट कर दे। उसके बाद जो महीना है हम लोग का 10-25-30 हजार वो चालू कर दे। और मांग मेरा कुछ नहीं इसमें। महेश महतो का मानना है कि जो कंपनी हम लोग का अभी पढ़ रहा है सर, उधर गांव में सब प्राइवेट स्कूल में। का डिमांड सुनो। उसके बाद 3 लड़की है मेरा, ये सब लड़की सबका भविष्य देखते हैं सर। 2 लड़का है। हाथ मत लगाओ। क्या बोलेंगे? हाथ मत लगाओ। तो अभी वो जिगर जो आपके मालिक है उनसे कुछ बात हुई, क्या बोल रहे हो लोग? वो मेरा कॉले नहीं उठा रहा था। उसके बाद कमेटी वाला बुलाए। उसके बाद कमेटी वाला से बात भी नहीं किया सही से। वो तुरंत 2 बात बोला, घड़ी फोन मत करो। इनकी धर्मपत्नी हम उनसे जानेंगे कि क्योंकि घर गृहस्थी वही चलाती है, तो क्या मांगे आपका और क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? जाने तो ये बोलने की अवस्था में नहीं है। जो SM इंफ्रा कंपनी है उसके मालिक की इनकी डिमांड है कि उन्हें 10 या 5 लाख रुपए डिपॉजिट करें और जो मंथली पेमेंट है उनको दिया जाए। जो यहाँ की यूनियन, क्या मांग है आप लोगों की, किस तरह से? देखिए, यह जो बहुत दुर्भाग्य की बात है, आज जिस तरह से हमारे प्रवासी मजदूर के साथ घटना होती है, ये बहुत दुखद घटना है। ऐसे घटने में जो है सो सेठ लोग आनाकानी करते हैं, कुछ भी डिमांड होता है तो आनाकानी देने में असमर्थ जताते हैं। जबकि देखिए इसका हालत क्या है, आप स्वतः देख रहे हैं, दोनों पैर गया, मर गया होता एक बार तो वो ठीक था, लेकिन जीवित आज इसका कितना तकलीफ होगा। जब तक जिंदगी इसका रहेगा कोई काम नहीं करेगा। तो मेरा डिमांड है, मैं आदर्श श्रमिक एकता सामाजिक संस्था का संस्थापक हूँ और मैं अपने तरफ से डिमांड करता हूँ जो कंपनी है उससे 60 लाख मुआवजा इसको दे, और जो इंश्योरेंस होगा वो तो देना ही उसको। इंश्योरेंस तो इसका लिखा हुआ है, कंपनी ऑटोमेटिक अपने से नहीं देगा, इंश्योरेंस तो कंपनी देगी। अभी कोई यहाँ पे मिलने के लिए आया क्या? बहुत आए थे लेकिन उन्होंने सजेशन कुछ नहीं निकाला, वापस चला गया। हमारा जो डिमांड था वो नहीं माना, इसलिए हम लोग अभी जितने भी गाड़ी हैं हम लोग रोक दिए हैं। जब तक नहीं डिसाइड होगा हम लोग गाड़ी नहीं छोड़ेंगे। क्या मांगे आप लोग? वही मांग करना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक अगर इनका मुआवजा ना मिले
तब तक ड्राइवर भाइयों लोग से यही क्यों करता हूँ कि तब तक गाड़ी ना लगे। आज इनके साथ हुआ, कल आपके साथ भी हो सकती है। वही चीज मैं आपको यही सबसे बोलना चाहता हूँ, आप लोगों सभी ड्राइवर से बोलना चाहता हूँ कि आप लोग सब कोई मिल के, जितने हमारे ड्राइवर लोग हैं, सब कोई मिल के न्याय दिलाने वाला काम करें, न्याय दिलाने वाला काम करें, न्याय दिलाने वाला सबको। अब आप लोग से एक ही वो ये करते हैं कि सब ड्राइवर मिलके न्याय दिलाने वाला काम करें। यहाँ के जो ड्राइवर है उनका मानना है कि जब तक इनका मेडिक्लेम पास नहीं होता है तब तक जो इनका खर्चा है, जो इनका पारिवारिक खर्चा है, वो कंपनी उठाए ताकि इनका जीवन आसानी से गुजर सके। आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से पैर कट चुका है और इनसे जानेंगे क्या इनकी मांग है। क्या कहोगे? मैं तो एक ही चीज कहूंगा साहब कि देखिए, इनका पैर तो वापस आने वाला है नहीं। ये जिनके पास नौकरी कर रहे थे, इनका जो भी अभी ट्रीटमेंट होएगा, जो भी इनका खर्चा आ रहा है इलाज का, पहले फिलहाल तो वो जो जिनके पास ये नौकरी कर रहे थे वो उनका खर्चा पूरा उठाएं, और जो इनके बाद इंश्योरेंस का जो पैसा रहेगा और जो सेठ का उचित बनता है वो भी इनको मिलना चाहिए। क्योंकि इनके बीवी बच्चे, हम भी ड्राइवर है साहब, आज इनके साथ हुआ है कल हमारे भी साथ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये बंदा आज रोड पे बैठा है तो मतलब कल हम भी बैठ सकते हैं, ऐसा हम भी ड्राइवरी कर रहे हैं। ऐसे सेठ लोग आएंगे नहीं, हम लोग बुला रहे हैं, इतने ड्राइवर यहाँ, पूरा स्टाफ खड़ा है, कोई आ रहा है सुनने के लिए? कोई नहीं आ रहा है। क्या मांग है आपकी और क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारी मांग है ड्राइवर भाइयों से ये कि इनकी जिस तरह का सिचुएशन है आपके सामने ही है, इनकी बीवी है, इनकी 5 बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, जो कि लड़कियां बड़ी बड़ी हैं और लड़के छोटे छोटे हैं। अभी जिस हालत में इसकी है, यहाँ तो ये चल भी नहीं सकते ना कुछ कर सकते। अब इनका लाइफ खत्म हो गया, एक जगह से ये पूरा स्वस्थ हो गए एकदम बिल्कुल। हम लोगों का कहना है कि इनको जितना मुआवजा दिया जाए इनकी बेहतर लाइफ के लिए, कम से कम नहीं तो 10 लाख या 15 लाख की डिपॉजिट होनी चाहिए। और प्रत्येक माह जो मंथ इसको मिलती थी 25,000 30,000 जो भी मिलती थी, इनको सुचारू रूप से चालू किया जाए, इसको मिल जाए। मेरी तरफ से यही। यहाँ के जो ड्राइवर्स उनका मानना है कि जो कंपनी है वो इनके ऊपर विशेष ध्यान दे ताकि इनका घर परिवार चल सके जब तक मेडिक्लेम पास नहीं होता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग, क्या डिमांड है? डिपॉजिट करने के लिए डिमांड। जैसे क्या है, हम लोग का कहना यही है, जो अभी बोल रहे थे लोग कि 20,000 रुपया मंथ देंगे, 25 से 30 डिमांड किए थे हम लोग, लेकिन 20,000 रुपया की बात किए थे, वो भी क्लियर करके गए नहीं और कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई ये नहीं हो रहा है। अभी क्या है कि इनका जो गाड़ी चलाते हैं उस कंपनी का कोई कमाने के लिए किसी तरह कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है उस कंपनी से कि वो ड्राइवर का क्या हाल है, क्या नहीं है, गाड़ी किस लिए खड़ा है। उसके कंपनी का कोई मालिक या कोई मेहता मैनेजर सुनवाई नहीं कर रहा है, उसका साफ कोई रिक्स ही नहीं ले रहा है। ये बताइए, उसका छोटा छोटा भी बच्चा है, वो रोड पे कहाँ जाएगा, उसका कौन रिक्स लेगा, उसका जवाबदारी कौन लेने वाला है? आप बताइए, रोड पे ऐसा हादसा हो रहा है तो कौन जवाबदारी लेने वाला है? ना उसका मेहता आ रहा है, ना मैनेजर आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं वो आ रहा है यहाँ सुनने के लिए? उसका गाड़ी वो नौकरी चला, उसका नौकरी कर रहा था ना, उसको आना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं परेशानी है, उसका सहना चाहिए ना। अभी वो घूम रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा, बेचारा रोड पे बैठा है। तो हम यही बोलेंगे कि कम से कम 25 से 30,000 रुपए उसको बच्चे के खर्चा के लिए हर महीना देना चाहिए। और जो इंश्योरेंस उसका पास होता है 30 लाख 50 लाख जो होगा, वो देने के लिए इसका सेठ सरकार है या ये कंपनी का मालिक मेहता जो है वो बताए कैसा क्या निर्णय करना चाहिए। हम यही कहना चाहेंगे, बाकी और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। क्या डिमांड है? आप लोग आए हुए हैं कि क्या? देखिए, जिस तरह से घटना घटी हुई है तो सेठ ने कुछ इलाज किया और बाद में रास्ते में छोड़ दिया है। कुछ बात हुआ था कि हम देंगे, जब तक इंश्योरेंस पास नहीं होती है तब तक हम पैसा देता रहेंगे, तो बीच रास्ते में उन्होंने छोड़ दिया। ना उसका मालिक आता है, ना सुपरवाइजर आता है, तो कोई कुछ कभी उसका इलाज के लिए पैसा खर्च कोई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए मैं यही कहूंगा कि फिलहाल उसको 10 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट दे दे, और प्लस ये अपना इंश्योरेंस जब तक नहीं पास होता है तब तक उसको 25 से 30,000 पर मंथ दिया जाए। सेठ से यही मैं विनती करूंगा, और नहीं सुनती है तो मैं यही चाहूंगा कि कानून कार्रवाई किया जाए सेठ से। बस मेरी तरफ से यही है, विनती रहेगी। तुम कितने साल से गाड़ी चला रहे हो? मैं इधर 2018 से मुंबई गाड़ी चला रहा है। कोई देवर एमसीएल गाड़ी ड्राइवर जितना निकालेगा आज का डेट में गाड़ी सब खड़ा रहना मांगता है। जो ड्राइवर गाड़ी निकालेगा उसको पूरा पैसा मिलेगा, तभी इधर से गाड़ी उसको छोड़ेगा, तो नई गाड़ी छूटेगा। जो ड्राइवर इधर से गाड़ी निकालेगा, गाड़ी में रस्सी बांध के इधर से किला से स्टार्ट करके मैं फिर से उनसे मिलूंगा थोड़ा। अभी आप कितने तारीख को
हॉस्पिटल से निकले हैं और क्या? ये 7 तारीख का निकले हैं सर। एक महीना हो गया, 7 तारीख का निकले थे। उसके बाद फिर डिस्चार्ज में बुलाया था 14 तारीख का। उस समय गए था, बोलिए सुनाइए दिए, और फिर अभी बुलाया है 14 तारीख का चेक करने के लिए। हाँ, बैंडेज करता है इसका, ड्रेसिंग के लिए। और उस समय सेठ बोला था कि वो पैर भी लगवा देंगे और एक 3 चक्का साइकिल जो होता है बैटरी वाला, वो वाला भी खरीदवा देंगे। तो अभी भी इधर खर्चा में पीछे आ रहा है, तो ये सब किधर करेगा? आपको इस सेठ के ऊपर भरोसा है? क्या नाम सेठ का? जिगर भाई के ऊपर भरोसा है? क्या कंपनी नाम? वो फोन नहीं उठा रहा है अभी मेरा, तो वो फोन नहीं उठा रहा है। कंपनी का नाम क्या है? SMP इंफ्रा। SMP इंफ्रा के जो जिगर भाई है, इनका कहना है कि अभी वो फोन भी नहीं उठा रहे हैं और जब तक ये हॉस्पिटल में जब तक उनकी देख रेख किया, अब उनकी डिमांड है कि उनके अकाउंट में कम से कम 10 या 5 लाख रुपए दे और मंथली जो 20 से 25 जो उनकी जरूरत है। एक्चुअली देखा जाए तो उनकी जरूरत है, क्योंकि उनका भरण पोषण उसी के सहारे रहेगा। मेडिक्लेम जब भी पास होता है तब वो अलग बात है। क्या कहना चाहेंगे आप? कितने बच्चे आपके? 5 बच्चे। जो 14 तारीख को घटना हुई है, एक्सीडेंट हुआ है महेश महतो का, वो कंपनी का नाम है, ये कंपनी आप देख सकते हैं SMP इंफ्रा, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स हैं। अब ये देखना होगा कि ये जो इसके मालिक हैं ये बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं और उनका मानना है कि उनके भरण पोषण के लिए उनको कुछ डिपॉजिट दिया जाए 10 से 15 लाख रुपए, और वही उनको 20 से 25 हजार रुपए मंथली दिया जाए, ताकि उनका जो बच्चे हैं, 3-4 बच्चे हैं, उनके समस्या का वो किया जाए। और आगे ये लोग अपना क्या करेंगे? देखिए, अभी अगर ये देने में सक्षम नहीं है तो हम लेबर कोर्ट में जाएंगे, वहाँ FIR करेंगे। उसके बाद अर्जी, तो अभी पुलिस चौकी में जा रहा हूँ, पुलिस चौकी में जाके एक अर्जी दे देता हूँ जो मेरा डिमांड है। हाँ, अगर नहीं कार्रवाई करता है प्रशासन तो फिर लेबर कोर्ट तक जाएंगे हम। और देखिए, इनका सबसे बड़ा तकलीफ है कि 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे में 3 बड़े हैं, बेटी है, लड़की है। वो शादी के लायक है एक लड़की। अभी उसका शादी करने में आज के डेट में कैसे भी करोगे तो 10 से 12 लाख नॉर्मल, और रहे सही कीजिएगा सेठ के जैसा तो 20 लाख जा सकता है। लेकिन अभी 3 लड़की है, अगर 3 लड़की का हिसाब से, शादी का हिसाब से, एक लड़की का भी शादी का खर्च बोला जाए तो कम से कम 15 लाख, 15 या 45 होता है। 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, लड़का का पढ़ाई है, लड़की का शादी हो जाएगा, वो तो अपना घर चले जाएंगे। लेकिन लड़के लोग का भविष्य क्या होगा? उसके लिए तो पढ़ाई लिखाई का खर्च चाहिए। वैसे स्थिति में कंपनी से जो मैंने मांग किया 60 लाख, वो 60 लाख दे। उसके बाद जब इंश्योरेंस होगा, इंश्योरेंस बाद की बात है, इंश्योरेंस होएगा लेकिन 2 साल लगेगा कि 3 साल लगेगा मेरे को मालूम है, क्योंकि आज से मैं बहुत इंश्योरेंस पास करवाया हूँ कंपनी के माध्यम से, लेकिन 1.5 से 2 साल लगता है, इससे पहले इंश्योरेंस नहीं मिलता है। तो ऐसे स्थिति में अभी 60 लाख उसको दे दे, और जो मंथली है, मंथली 25 से 30 लाख, 25 से 30 हजार, हाँ वो दे। और अभी फिलहाल जो इलाज का खर्चा है, जो इलाज का खर्चा वो भरण पोषण वो उठावे। उसके बाद इसका 3 व्हीलर जो गाड़ी होता है, इधर उधर जाने के लिए तकलीफ होता है। अभी बाथरूम भी जाना पड़ता है तो उठा के उसका वाइफ लेके जाती। सोचिए कितना दुर्भाग्य है हमारे प्रवासी मजदूर के साथ, जो कि सेठ लोग कान में तेल लगा के सो गए हैं। अभी हम लोग सुबह 8 बजे से बैठा हूँ इधर, अभी 3 बज गया, अभी तक कोई आया नहीं। अभी तक कोई नहीं आया था। वो चमचे लोग आया था, अपना चमचीगिरी करने आया था, लेकिन चमचागिरी यहाँ नहीं चलेगा। जब हम लोग रहेंगे यहाँ तो कुछ भी कर सकते हैं। और जो चमचे हैं वो सावधान रहे, सेठ लोग का चमचा बनना उचित नहीं है। मैं अपने ड्राइवर भाइयों लोग से भी बोलता हूँ, बहुत ऐसा ड्राइवर है जो सेठ का चमचा है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ तुरंत वहाँ पर रिकॉर्ड होता होगा उसके पास। SM इंफ्रा बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर जो है वो
जल्द से जल्द इस पे ध्यान दें, नहीं तो ये लोग अगला कदम बहुत कड़ा उठाने वाले हैं। बिल्कुल सर। और मेरी भी यही उम्मीद है कि जो SMPM कंपनी है वो जो है जल्द से जल्द इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। शिवसेना यूबीटी की तरफ से सोमवार को वासी छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर महायुति सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर नवी मुंबई शिवसेना संपर्क प्रमुख MK मढ़वी ने कहा कि यह सरकार पूरी तरह से निर्लज्ज है। मंत्रियों पर इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी उन्हें पद से नहीं हटाया जा रहा है। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो थोड़े थोड़े आरोपों पर मंत्री इस्तीफा दे देते थे। इस सरकार के मंत्री रमी खेलते हुए पकड़े जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देते, बल्कि उन्हें खेल मंत्री बना दिया जाता है। गिरीश महाजन पर हनी ट्रैप कर विधायकों को पाला बदलने पर मजबूर करने का गंभीर आरोप है। उसके बावजूद वह आज भी मंत्री बने हुए हैं। एक मंत्री के बाजू में पैसा से भरा बैग मिला है और एक मंत्री जादू टोना कर रहा है। सरकार भ्रष्ट मंत्रियों को हटाने की जगह भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे लोगों को पार्टी में लेकर उनके पाप धोने का काम कर रही है। भाजपा सरकार उन लोगों को मंत्री बनाकर महाराष्ट्र को बर्बाद करने का काम कर रही है। पहले अगर किसान आंदोलन करते थे तो सरकार घबरा जाती थी और तुरंत उनसे बातचीत शुरू कर देती थी, लेकिन आज की सरकार किसानों के आंदोलन पर भी ध्यान नहीं देती है। इस सरकार में न तो किसान सुरक्षित है, न ही महिलाएं सुरक्षित है। पढ़े लिखे युवा को भी रोजगार नहीं मिल रहा है। बच्चों के माता पिता उन्हें बड़ी आशा के साथ पढ़ाते हैं, लेकिन जब पढ़ाई के बाद भी उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है तो उनके हाथ निराशा ही मिलती है। इस सरकार से संवेदना नहीं रह गई है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार बाकी विषयों को लाकर मुख्य मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अब जब तक इन मंत्रियों के इस्तीफे नहीं हो जाते हैं, हमारी पार्टी शांत नहीं बैठेगी। आज के आंदोलन में मनसे के लोग शामिल नहीं हुए, जिसके चलते दोनों पार्टियों के बीच चल रही गठबंधन की चर्चाओं पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। आमचे शिवसेना प्रमुख उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज आम्ही या ठिकाणी आंदोलन घेतलेलं आहे। पुऱ्या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एकाच वेळेस या ठिकाणी आंदोलन होत असताना आपण या ठिकाणी मीडिया पण या ठिकाणी बघते की पुऱ्या महाराष्ट्रामध्ये भ्रष्टाचार बोकाळलेला आहे आणि भ्रष्टाचार होत असताना जे मंत्री महोदय टॉवेलवर बसून बाजूला टॉवेलवर बसून त्या ठिकाणी पैशाच्या बॅगा भरलेल्या असतात। दुसरा मंत्री त्या ठिकाणी फरफटाक करतोय, त्या ठिकाणी जादूटोणा करतोय, एका ठिकाणी ठोसे लावतायत। अशा पुऱ्या जे गद्दार लोक आहेत अशा सर्व मंत्र्यांची या ठिकाणी हकालपट्टी झाली पाहिजे, म्हणून या ठिकाणी आमचे आदरणीय पक्षप्रमुख उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरे सर्व आमचे नेते यांच्या मार्गदर्शनाखाली या ठिकाणी आंदोलन घेण्यात आलेलं आहे। कारण याच्या अगोदर या सरकारच्या अगोदर या भ्रष्टाचारी सरकारच्या अगोदर आपल्यालाही सर्वांना माहिती आहे की एखाद्या देशामध्ये रेल्वेचा या ठिकाणी जर ऍक्सिडेंट झाला तर सेंट्रलचा रेल्वे मंत्री त्या ठिकाणी राजीनामा देत होता। उदाहरण द्यायचं झालं तर ज्या वेळेस आपल्याला ताजमध्ये बॉम्बहल्ला झाल्याच्या नंतर फक्त त्या ठिकाणी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख साहेब यांच्या बरोबर राज गोपाल वर्मा हे फक्त त्यांच्या बरोबर असताना ज्यावेळेला आवाज उठवला गेला त्यावेळेस मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला। त्याचबरोबर आपले आदरणीय RR पाटील साहेब छोटंसं त्यांनी वाक्य केलं होतं की अशा थोड्या थोड्या छोट्या छोट्या घटना होत असतात, तरी सगळ्यांनी त्या ठिकाणी आवाज उठवल्याच्या नंतर उपमुख्यमंत्री गृहमंत्री RR पाटील साहेबांनी राजीनामा दिला होता। पण आताचं सरकार निर्लज्ज सरकार हे सर्व डोळ्यासमोर सगळ्यांच्या होत असताना एकाचाही राजीनामा घेतला जात नाही। जे भ्रष्टाचार करतात त्यांना आपल्या पार्टीत घेऊन त्यांना धुतल्या आणल्याचे बनवतायत। त्यांच्याकडे गेल्याच्या नंतर मला वाटतं ती जी वॉशिंग पावडर आणलेली आहे ती भ्रष्टाचार मंत्र्यांना जवळ घेऊन या महाराष्ट्राचं वाटोळं करायला घेतलेलं आहे। त्या ठिकाणी मतदानाची चोरी होतीये। आता महाराष्ट्रामध्ये काय चोरी व्हायचं बाकी राहिलंय? महाराष्ट्रामध्ये ना आमच्या महिला संरक्षण आहेत, ना आमच्या युवकांना या ठिकाणी नोकऱ्या आहेत। कोणताही क्षेत्र घ्या, सर्वात मोठा शेतकरी म्हटला की शेतकऱ्यांचं नुसतं आंदोलन होणाऱ्या म्हटल्याच्या नंतर याच्या अगोदरचे सरकार भयभीत होऊन त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांचा प्रश्न इमिजिएटली सोडवला जात होता। पण आजचा जे 2014 पासून आलेली सरकार टोटली फेल झालेलं आहे आणि ते फेल होत असताना
मला इथं प्रामाणिकपणे सांगावं वाटतं, 7-7, 8-8 महिने आमचा शेतकरी त्या ठिकाणी पावसात, उन्हात, थंडीमध्ये आपल्या मागण्या मागण्यासाठी 700 शेतकरी आमचे त्या ठिकाणी मरण पावले जातात. दर दिवशी आपल्या महाराष्ट्रामध्ये 7 ते 8 शेतकरी या ठिकाणी आत्महत्या करतायत. तरी या सरकारचे डोळे उघडत नाही, कारण सरकार आंधळा झालेला आहे. फक्त आणि फक्त या सरकारला जे कोणी चोऱ्यामाऱ्या करतायत, जे कोणी महाराष्ट्राला लुटतायत, जे कोणी भ्रष्टाचार करतात, यांना मांडीवर घेऊन बसून या ठिकाणी सरकार करतात. त्याच्यामुळे आज या ठिकाणी आमचे नवी मुंबई जिल्हा प्रमुख प्रकाश पाटील असतील, आमच्या नवी मुंबई जिल्हा प्रमुख आरोग्य विभागाचे जिल्हा प्रमुख प्रवीण म्हात्रे असतील, या ठिकाणी आमचे महिला जिल्हा संघटक शिंदेताई असतील, बेलापूर विधानसभेचे प्रमुख कुलकर्णी साहेब, त्याचबरोबर शहर प्रमुख ससाने आहेत, त्याचबरोबर आपले कोटीवाला आहेत, युवासेना या ठिकाणी आहेत, सर्व जिल्हा प्रमुख आहेत. आमचं एवढंच म्हणणं आहे, सरकार कोणीही आलं तर त्याची जिम्मेदारी आहे की जनतेला या ठिकाणी सुविधा द्यायला पाहिजे. ह्या लोकांना शरम झालीच नाही. त्यांचे केंद्राचे खासदार, त्यांचे आमदार रस्त्यावर बसून त्या ठिकाणी काय करतायत आपण त्या ठिकाणी बघताय, आणि अशा लोकांवर पण त्या ठिकाणी कारवाई केली जात नाही. म्हणजे हे सरकार अपयशी ठरलेलं आहे. यांची पापं लपवण्यासाठी हे आणखी कुठला तरी उठाव करतायत आणि मग त्या ठिकाणी कुठला तरी विषय घेऊन त्या कार्याला बगल देण्याचा प्रयत्न करतायत. आमचं एवढंच म्हणणं आहे की तुमच्या जर हिंमत असेल तर या ठिकाणी बॅलेट पेपरने इलेक्शन घ्यायला पाहिजे. काही नाही, सगळ्या बाबतीत चोऱ्या केल्या जात आहेत. आता तो भुमरे, तो याच्या अगोदर कुठेतरी काय काम करतो तर भुमरे 150 एकर जागा सरकारची हडप करून ड्रायव्हरला त्या ठिकाणी त्याच्या नावावर जागा हडप करतात. म्हणजे चाललंय काय, अदानीला देश विकत चाललेले आहेत. आणि मग जर असं जर असेल तर मीडिया सहित मी मीडियालाही विनंती करेल की कुठेही गेलं तर आपल्याला नोकऱ्या मिळणार. आम्हाला माहिती आहे की मीडियालाही त्यांचे जे वरचे जे आहेत, अदानीने जे मीडिया विकत घेतलेले, अंबानीने जे मीडिया विकत घेतले, त्यांना सरळ सांगतात की आम्ही सांगू त्याच न्यूज दाखवायचे आहेत. तर माझी या ठिकाणी विनंती आहे की आपल्या देशामध्ये लोकशाही आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान लिहिलंय. त्या संविधानामध्ये जे आपले 4 स्तंभ आहेत लोकशाहीचे, तेही सगळे या लोकांनी गडप करण्याचा प्रयत्न केलाय. जनतेपेक्षा जर खरी ताकद जर कुठली असेल, म्हणजे ती बंदूक असेल, तोप असेल, त्याच्यापेक्षा जर ताकद कुणाची असेल तर ती मीडियाची आहे. तर माझी विनंती राहील की मीडियानी या ठिकाणी चूप बसू नका, कारण तुमच्यामुळे या देशाला, या महाराष्ट्राला कुठेतरी उभारणी मिळणार आहे. इथे नोकरी नाही तर दुसऱ्या ठिकाणी, तिसऱ्या ठिकाणी. पण तुम्ही आपण जर या ठिकाणी या आंदोलनाच्या माध्यमातून जर जागृत राहिलो नाही तर येणाऱ्या भविष्यामध्ये महाराष्ट्र हा देश तुम्हाला आम्हाला माफ करणार नाही. म्हणून खऱ्या अर्थानं पुऱ्या देशात या सरकारला, केंद्र सरकारच्या सरकारला, महाराष्ट्र सरकारला खऱ्या अर्थानं धारेवर धरणारा एकच त्या ठिकाणी जर कोणी नेता असतील ते आमचे आदरणीय उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरे. त्यांच्या मार्गदर्शनाने आम्ही या ठिकाणी हा आंदोलन केलेला आहे. आणि आंदोलनाला ज्या पद्धतीने साथ मिळाली आहे आणि तुमची मीडियाची या ठिकाणी साथ मिळाली आहे, तर आम्ही या ठिकाणी या सरकारचं, महाराष्ट्र सरकारचं, केंद्र सरकारचं आम्ही या ठिकाणी जिथपर्यंत या भ्रष्टाचारी मंत्र्यांचं आपण त्या ठिकाणी पाहिलेलं, कोणता मंत्री बनिया चड्डी बनवणार येतो काय, कुठला मंत्री त्या ठिकाणी बॉक्सिंग खेळायला येतो, बॉक्सिंग खेळायचं या इकडे आमच्या शिवाजी चौकामध्ये तुम्हाला आम्ही बॉक्सिंग दाखवतो काय असते ती. म्हणजे या पद्धतीने अशा पद्धतीने करत असतील अशा मंत्र्यांचं जिथपर्यंत त्या ठिकाणी त्यांना मंत्रिपदावरून हकललं जात नाही तिथपर्यंत महाराष्ट्राची जनता, आमचा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष शांत बसणार नाही. आणि आम्ही त्याचा जिथपर्यंत यांना मंत्रिपदावरून हकलत नाही अशा सरकारचा आम्ही या ठिकाणी निषेध करतो. पुरुषोत्तम कनौजी के साथ पंकज विनोसी की रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई. मटके मटके झटके मारे हैं, तू आज शोला तो हम भी फुवारे हैं, तू आसमां पे है तो चांद तारे हैं हम. मटके मटके झटके मारे हैं, तू आज शोला तो हम भी फुवारे हैं, तू आसमां पे है तो चांद तारे हैं हम. चाहे दम निकले ये दम है कसम तेरी कसम, तुझे आज छोड़ेंगे ना हम.
सालाबादप्रमाणे यंदाही मनसे शहर सहसचिव अभिजित देसाई आणि मनसे प्रतिनिधी अनुष्का देसाई यांच्या पुढाकाराने नेहरू सेक्टर 2 येथे भव्य दिव्य दहीहंडी महोत्सवाने जल्लोषाची उंची गाठली। परिसरात ढोल ताशांचा गजर, टाळ्यांचा कडकडाट आणि आनंदाचा उत्साह अशा अविस्मरणीय वातावरणात उत्सव पार पडला। तब्बल 50 गोविंदा पथकांनी एकापेक्षा एक थरारक मानवी मनोरथे रचून दहीहंडीला सलामी दिली। रंगीबिरंगी फेटे, एकसारखे गणवेश आणि उंचावर झुलणारी हंडी पाहून प्रेक्षक मंत्रमुग्ध झाले। लावणी, नृत्य, मराठी गाणी, हिंदी गजल आणि वाद्यनृत्यांच्या सुरांनी स्वभावताल रंगला। सर्व गोविंदासाठी अभिजित देसाई यांच्या टीमकडून मोफत भोजनाची व्यवस्था करण्यात आली होती, तर अनुष्का देसाई यांनी सजावटीपासून पाहुण्यांच्या स्वागतापर्यंत प्रत्येक गोष्ट मनापासून लक्ष घालून कार्यक्रमाची शोभा वाढवली। कार्यक्रमात मनसे विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष अमित ठाकरे स्वतः उपस्थित राहून गोविंदांचा उत्साह दुगुणित करत होते। लहान मुलांबरोबर खेळताना त्यांच्या चेहऱ्यावरचे हसू पाहून जमलेल्यांनी टाळ्यांचा गजर केला। या प्रसंगी गजानन काळे म्हणाले, दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी आम्ही नवी मुंबईत दहीहंडीचा जल्लोष साजरा केलाय। लोकांच्या उत्साही सहभागामुळे हा उत्साह अधिक भव्य होत आहे। तर अभिजित देसाई म्हणाले, अशा भव्य दहीहंडीचे आयोजन करण्याची संधी मिळाली माझ्यासाठी मोठं भाग्य आहे। एकूणच हे 4थं वर्ष आहे अभिजित देसाई, अनुष्का देसाई आणि आमच्या संपूर्ण नेहरू जोईनगर टीमने जी सराव हंडी, ज्याला आपण चोर हंडी म्हणतोय, आणि त्या आयोजनासाठी अमित साहेब ठाकरे हे खास प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते। ठाकरे आल्यानंतर काय गर्दी होते याचा अनुभव आता नेरुळकरांनी आणि नवी मुंबईकरांनी घेतलाय। हजारोच्या संख्येने लोक अमित साहेब ठाकरे यांच्या स्वागतासाठी उपस्थित होते। अमित साहेब ठाकरे सुद्धा ज्या पद्धतीने लोकांमध्ये मिक्स झाले, ज्या पद्धतीने त्यांनी बालगोपाळांना सांभाळलं आणि त्यांच्या समोर एक 7-7, 8-8 थरांची सलामी या नेहरू नवी मुंबईतल्या करावे गाव असेल, धारावे गाव असेल, इथल्या सगळ्या पथकांनी दिली आणि हा सगळा आनंद, सगळा उत्साह आणि सण त्यांच्या साक्षीने आम्हाला साजरा करता आला, याचा आम्हाला खूप खूप आनंद आहे। आनंद वाटतोय की ज्यावेळी न्यायालयाने आदेश दिला होता की रस्त्यावर तुम्ही दहीहंडी करू शकत नाही, त्यावेळी राजसाहेबांनी जो आदेश दिला होता आम्हाला महाराष्ट्र सैनिकांना, त्याला हे 4थं वर्ष आहे आणि या वर्षी सुद्धा खूप धूमधडाक्यात मराठी माणूस एकत्र येऊन हा सण साजरा करतोय आणि न्यायालयाचा सुद्धा आम्ही अवमान करत नाही आणि सरकारचं सुद्धा जे काय अटी शर्तीनं हे करून आम्ही सण साजरा करतोय। कारण महाराष्ट्रामध्ये मराठी सण साजरे झाले पाहिजेत, हे राजसाहेबांचं जे धोरण आहे त्याला मी काही ना माझं फुलाची पाकळी देऊन काहीतरी माझं सहकार्य लागतं, हेच माझ्यासाठी खूप मोठं योगदान आहे। कार्यक्रमादरम्यान उपस्थित महिलांनी अमित ठाकरे यांना राख्या बांधून राखी पौर्णिमेचाही आनंद साजरा केला। व्हिडिओ जर्नलिस्ट राहुल कदमसह प्रियजवानचा रिपोर्ट, नवी मुंबई। संत निरंकारी मिशनच्या माध्यमातून नारकरी पार्क येथे मोफत नेत्र तपासणी शिबिर व मोतीबिंदू ऑपरेशनचे आयोजन करण्यात आले। या शिबिराचा लाभ सुमारे 200हून अधिक निरंकारी भक्तगण व स्थानिक नागरिकांना घेतला। के.बी. हजी बच्चू अली नेत्र रुग्णालयातील तज्ञ डॉक्टरांच्या टीमने उपस्थितांची नेत्र तपासणी करून गरजूवंतांना पुढील उपचारासाठी मार्गदर्शन केले। मोतीबिंदूचे निदान झालेल्या रुग्णांचे मोफत ऑपरेशन संत निरंकारी चॅरिटेबल फाउंडेशनच्या माध्यमातून बच्चू अली नेत्र रुग्णालयात करण्यात येणार आहे। शिबिराला आमदार कालिदास
कोलमकर यांनी भेट देऊन आयोजनाबद्दल संत निरंकारी मिशनच्या कार्याचे कौतुक केले। नेत्र तपासणी शिबिर यशस्वी होण्यासाठी प्रेमा ओबराय, स्थानिक मुखी रामशंकर जयस्वाल व सेवादल सदस्यांनी विशेष मेहनत घेतली। तसेच शिबिरात गरजू रुग्णांना मोफत चष्म्याचे वाटप करण्यात आले। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा आज संत निरंकारी सत्संग भवन नाटकने पर घोटाला में नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 200 लोगों ने भाग लिया और जिसमें 14 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन के लिए भेजा गया और 6 लोगों के लिए स्पेशल तकलीफ था वो भेजा गया। तो बाकी लोगों के लिए टीका पर की इलाज करके दवा दिया गया। तो सतगुरु माता जी आप जी का लाख लाख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। कितने लोग हॉस्पिटल में पहुंच नहीं पाते, डॉक्टर के पास पहुंच नहीं पाते, तो इस जल सेवा में आपकी कृपा से फ्री में हो रही है चिकित्सा का और ऑपरेशन का। प्यार से कहिए हाँ जय। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज टुडे। नवी मुंबई महानगर पालिका के तुर्भे स्थित स्कूल की बच्चियों ने तुर्भे MIDC पुलिस स्टेशन में पुलिस कर्मियों को राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाया। इस अवसर पर बच्चियों ने कहा कि हमारे स्कूल की तरफ से ये बॉर्डर पर हमारे देश की रक्षा कर रहे सैनिकों के लिए राखियां भेजी गई हैं। सीमा पर बैठे सैनिक हमारे भाई हैं क्योंकि वह निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा कर रहे हैं। इसी के साथ शहर में पुलिस कर्मी हमारी रक्षा करते हैं। समाज के अंदर मौजूद असामाजिक तत्वों से पुलिस कर्मी ही हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए हमारे शिक्षकों ने हमें पुलिसकर्मियों को राखी बांधने के लिए प्रेरित किया है। इस अवसर पर तुर्भे MIDC पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक आवा पाटिल ने कहा, हमेशा अपनी बहनों और बच्चियों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। हमारी पुलिस महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार पर जीरो टॉलरेंस के साथ पेश आती है। आज इन बच्चियों ने हमें राखी बांधकर एक पारिवारिक रिश्ता कायम कर लिया है। सभी महिला हमारी बहन और बेटी के समान है। इसी प्रेरणा के साथ काम करते हैं। आज के इस बंधन से हमारी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है। अब हमारे सभी साथियों को देश और शहर की सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी को ध्यान में रखकर सिर्फ काम नहीं करना है, बल्कि इस शहर के लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं और यहाँ की महिलाएं हमारी बहनें हैं। इसे ध्यान में रखकर संविधान के मुताबिक न्याय दिलाने का प्रयास करना चाहता हूँ मैं। आज मी पोलीस भावांना राखी बांधायला आले। मला खूप आनंद वाटते की मी माझ्या पोलीस भावांना राखी बांधली। मला पोलीस भावांना राखी बांधायला खूप आनंद वाटला। ते लोक पण खूप हसले की मला बहिणीकडे जायला होत नाही, म्हणून आम्ही लोक त्यांना राखी बांधायला आलो। रक्षाबंधन, सैनिकांना राखी बांधणी, पोलीस बांधवांना राखी बांधणी हा उपक्रम आमच्या 7 ऑगस्टला साजरा करायचा होता। सर्व मुलांनी राख्या बनवून आणलेल्या आहेत, पण प्रातिनिधिक स्वरूपात आमच्या शाळेतील 5 मुली स्वतः बनवलेली राखी आणि ती सुद्धा देशभक्ती तिरंगा असलेली राखी मुलांनी बनवलेली आहे आणि ती राखी त्यांनी प्रत्यक्ष जे आपले रक्षण करते आहेत पोलीस त्यांच्या हातामध्ये बांधून आणि तो सोहळा बघताना आम्हाला सुद्धा खूप बरं वाटलं की त्या लोकांना राखी बांधण्यासाठी सुद्धा खरोखर वेळ नाहीये। त्यांच्या हातामध्ये फोन आहे, त्यांना दुसऱ्यांशी बोलणं आहे आणि त्यांना आमची मुलं बघून एवढा आनंद झाला की ते स्वतःच्या बहिणीची राखी घेण्यासाठी ते जाऊ शकत नाहीत। त्यांना त्यांचं ड्युटी बजवायची असते, पण त्यांना ह्या मुली आलेल्या पाहून ते खूपच सद्गदित झाले आणि त्या आमच्या मुलींचा त्यांनी यथोचित सत्कार त्यांची राखी स्वीकारली आणि खूपच त्यांना धन्यता वाटली। आम्हालाही खूप बरं वाटलं की आमचे रक्षण करते आहेत, त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला त्यांच्या घरच्या लोक लक्ष देणारे आहेत, पण ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत। पण प्रातिनिधिक स्वरूपात आमच्या मुलांनी त्यांची कृतज्ञता व्यक्त राखी बांधून केलेली आहे। खरोखरच त्यांना बहीण लाभल्याचं भाग्य लाभलं, याबद्दल आम्हाला सुद्धा मन भरून आलं। धन्यवाद सर। पुरुषोत्तम के साथ पंकज यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई। नवी मुंबई की नेरुल स्थित सुसरा अस्पताल में सोमवार दोपहर अस्पताल के बेसमेंट में आग लग गई और आग का धुआं तीसरी मंजिल तक पहुंच गया।
अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी ने बताया कि आग बेसमेंट में मौजूद एसी के कंप्रेसर में लगी थी। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया है। साथ ही सभी मरीजों को अस्पताल से निकालने का काम बहुत ही तेजी गति से किया गया। अस्पताल में जब आग लगी तो करीब 21 मरीज अस्पताल में थे। 21 मरीजों को दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि एक मरीज को वाशी के फोर्टिस अस्पताल में ले जाया गया है। आग के समय 4 मरीज आईसीयू में भर्ती थे। सभी लोगों को ऑक्सीजन एम्बुलेंस से दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं इस घटना की अधिक जानकारी देते हुए फायर अधिकारी राजेंद्र सुविस्कर ने दी है। 11:58 को एक नेहरू फायर स्टेशन में एक वर्दी आई थी कि सुश्रुता हॉस्पिटल नेहरू सेक्टर 6 में फायर कॉल है करके। तो हमारी नेहरू की फायर टीम उधर स्पॉट पे सुश्रुता हॉस्पिटल में पहुंची तो उधर बेसमेंट में फायर थी। तो उन्होंने बेसमेंट की फायर पूरी क्लियर की। फिर सर्च एंड रेस्क्यू भी एक साइड से चालू रखा। सर्च एंड रेस्क्यू में हम लोग को नियर अबाउट 10 से 12 पेशेंट जो मिले उनको हम लोग ने रेस्क्यू करके एम्बुलेंस से उन्होंने मैनेजमेंट ने इधर पनवेल के उनके सुश्रुता हॉस्पिटल में भेज दिया। आईसीयू में 4 पेशंट आईसीयू मध्ये होते आणि जनरल वॉर्ड में ऐसे पेशंट है। टोटल 21 पेशंट है उन्होंने बताया हम लोग को। उसमें से 10 से 12 का हम लोग ने रेस्क्यू किया है पूरी टीम ने। इसमें कोपरकर्णी टीम थी, वाशी टीम थी और हमारे ऑफिसर और कर्मचारी थे सब। इस आग की वजह से कोई घायल या कुछ नहीं, अभी तक कुछ भी घायल नहीं है, कुछ भी ये नहीं है, कैजुअलिटी नहीं है। हम लोग ने पूरा सर्च एंड रेस्क्यू किया है। मैनेजमेंट के साथ भी हम लोग ने पूरा हेड काउंट पूछा है। आप मैनेजमेंट से एक बार फिर से इसका हे कर सकते हैं। त्याचा अहवाल देतील, पण प्राथमिक जी आवश्यकता होती की सुखरूप लोकांना बाहेर काढणं ते झालेलं आहे। हो, 21 पेशंट, सर्व कर्मचारी, सगळा स्टाफ आणि रिलेटिव्ह, सगळे पेशंटचे रिलेटिव्ह हे सगळे खाली आलेले आहेत। होती टोटल 21 पेशंट होते हॉस्पिटलमध्ये। सगळ्यांना इव्हॅक्युएट केलं। 4 आयसीयू मध्ये होते, बाकीचे सगळे 17 पेशंट वॉर्ड्स मध्ये होते, वॉर्ड आणि रूम मध्ये। सगळ्यांना सुरक्षितपणे हलवून पनवेलच्या सुश्रुता हॉस्पिटलला शिफ्ट केलेलं आहे। टोटल 40 ते 45 स्टाफ असेल। सगळे स्टाफ ओके आहे। सगळ्या स्टाफला इव्हॅक्युएट करून बाहेर आणलेलं आहे। टोटल 6 डॉक्टर्स होते ऑन ड्युटी, नर्सिंग स्टाफ, हाऊसकीपिंग स्टाफ, सगळा स्टाफ होता। त्यांचा रिसेप्शन वाला सगळा स्टाफ, बिलिंग अकाउंट वाले, लॅब वाले सगळे स्टाफ होते। सगळ्यांना बाहेर आणलं। आग विझली आता? आग विझली। आग खूप जास्ती नव्हती, पण धूर होता त्याच्यामुळे लिफ्टद्वारे धूर वर गेला असल्यामुळे जखमी वगैरे नाही, काहीच नाही। पुरुषोत्तम कनौजी साथ पंकज विनोसी की रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई। हटके मटके झटके मारे हैं तू आज शोला तो हम भी फुवारे हैं। तू आसमां पे है तो चांद तारे हैं हम। हटके मटके झटके मारे हैं तू आज शोला तो हम भी फुवारे हैं। तू आसमां पे है तो चांद तारे हैं हम। चाहे दम निकले ये दम है कसम तेरी कसम, तुझे आज छोड़ेंगे ना हम। सालाबादप्रमाणे यंदाही मनसे शहर सहसचिव अभिजित देसाई आणि मनसे प्रतिनिधी अनुष्का देसाई यांच्या पुढाकाराने नेहरू सेक्टर 2 येथे भव्य दिव्य दहीहंडी महोत्सवाने जल्लोषाची उंची गाठली। परिसरात ढोल ताशांचा गजर, टाळ्यांचा कडकडाट आणि आनंदाचा उत्साह अशा अविस्मरणीय वातावरणात उत्सव पार पडला। तब्बल 50 गोविंदा पथकांनी एकापेक्षा एक थरारक मानवी मनोरथे रचून दहीहंडीला सलामी दिली। रंगीबिरंगी फेटे, एकसारखे गणवेश आणि उंचावर झुलणारी हंडी पाहून प्रेक्षक मंत्रमुग्ध झाले। लावणी, नृत्य, मराठी गाणी, हिंदी गजल आणि वाद्यनृत्यांच्या सुरांनी स्वभावताल रंगला। सर्व गोविंदासाठी अभिजित देसाई यांच्या टीमकडून मोफत भोजनाची व्यवस्था करण्यात आली होती। तर अनुष्का देसाई यांनी सजावटीपासून पाहुण्यांच्या स्वागतापर्यंत प्रत्येक गोष्ट मनापासून लक्ष घालून कार्यक्रमाची शोभा वाढवली। कार्यक्रमात मनसे विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष अमित ठाकरे स्वतः उपस्थित राहून गोविंदांचा उत्साह दुगुणित करत होते। लहान मुलांबरोबर खेळताना त्यांच्या चेहऱ्यावरचे हसू पाहून जमलेल्यांनी टाळ्यांचा गजर केला। या प्रसंगी गजानन काळे म्हणाले, दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी आम्ही नवी मुंबईत दहीहंडीचा जल्लोष साजरा केलाय।
लोकांच्या उत्साही सहभागामुळे हा उत्साह अधिक भव्य होत आहे. तर अभिजित देसाई म्हणाले, अशा भव्य दहीहंडीचे आयोजन करण्याची संधी मिळाली माझ्यासाठी मोठं भाग्य आहे. एकूणच हे 4थं वर्ष आहे अभिजित देसाई, अनुष्का देसाई आणि आमच्या संपूर्ण नेहरू जोईनगर टीमने जी सराव हंडी, ज्याला आपण चोर हंडी म्हणतोय, आणि त्या आयोजनासाठी अमित साहेब ठाकरे हे खास प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. ठाकरे आल्यानंतर काय गर्दी होते याचा अनुभव आता नेरुळकरांनी आणि नवी मुंबईकरांनी घेतलाय. हजारोच्या संख्येने लोक अमित साहेब ठाकरे यांच्या स्वागतासाठी उपस्थित होते. अमित साहेब ठाकरे सुद्धा ज्या पद्धतीने लोकांमध्ये मिक्स झाले, ज्या पद्धतीने त्यांनी बालगोपाळांना सांभाळलं आणि त्यांच्या समोर एक 7-7, 8-8 थरांची सलामी या नेरूळ नवी मुंबईतल्या करावे गाव असेल, धारावे गाव असेल, इथल्या सगळ्या पथकांनी दिली आणि हा सगळा आनंद, सगळा उत्साह आणि सण त्यांच्या साक्षीने आम्हाला साजरा करता आला, याचा आम्हाला खूप खूप आनंद आहे. आनंद वाटतोय की ज्यावेळी न्यायालयाने आदेश दिला होता की रस्त्यावर तुम्ही दहीहंडी करू शकत नाही, त्यावेळी रासाव्याने जो आदेश दिला होता आम्हाला महाराष्ट्र सैनिकांना, त्याला हे 4थं वर्ष आहे. आणि या वर्षी सुद्धा खूप धूमधडाक्यात मराठी माणूस एकत्र येऊन हा सण साजरा करतोय आणि न्यायालयाचा सुद्धा आम्ही अवमान करत नाही आणि सरकारचं सुद्धा जे काय अटी शर्तीनं हे करून आम्ही सण साजरा करतोय. कारण महाराष्ट्रामध्ये मराठी सण साजरे झाले पाहिजे हे राजसाहेबांचं जे धोरण आहे, त्याला मी काही ना माझं फुल न फुलाची पाकळी देऊन काहीतरी माझं सहकार्य लागतं, हेच माझ्यासाठी खूप मोठं योगदान आहे. कार्यक्रमादरम्यान उपस्थित महिलांनी अमित ठाकरे यांना राख्या बांधून राखी पौर्णिमेचाही आनंद साजरा केला. व्हिडिओ जर्नलिस्ट राहुल कदमसह प्रिया हजबंचा रिपोर्ट, नवी मुंबई. नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी में आज भारत और सिंगापुर के बीच उच्च स्तरीय लीडर्स डायलॉग आयोजित हुआ, जिसका केंद्र बिंदु रहा ग्रीन एंड डिजिटल मैरीटाइम कॉरिडोर की दिशा में सहयोग और क्रियावंत। यह एक कार्यक्रम भारत मैरीटाइम वीक 2025 से पहले आयोजित किया गया, जिसमें स्मार्ट पोर्ट्स, हरित जहाज और डिजिटल लॉजिस्टिक पर चर्चा हुई। मार्च 2025 में सिंगापुर में हुए समझौते पत्र को आगे बढ़ाते हुए दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने पायलट प्रोजेक्ट्स और तकनीकी साझेदारी पर विचार साझा किया। सिंगापुर के डिप्टी प्रधानमंत्री गन किम योंग ने कहा, भारत के साथ मिलकर हम एक ऐसा कॉरिडोर बना रहे हैं जो वैश्विक स्तर पर टिकाऊ और स्मार्ट शिपिंग का मॉडल बन सकता है। कार्यवाहक परिवहन मंत्री जेफरी सियो ने इसे भविष्य उन्मुख बंदरगाहों और मजबूत सप्लाई चेन के प्रति साझा प्रतिबद्धता बताया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वीडियो संदेश में कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सिंगापुर संबंधों ने नई ऊंचाई हासिल की है। जेएनपीटी का बीएमसीटी टर्मिनल्स इस साझेदारी का प्रतीक है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, यह दौरा महाराष्ट्र और सिंगापुर के संबंधों को और गहरा करेगा। बीएमसीटी टर्मिनल जेएनपीए की कंटेनर हैंडलिंग क्षमता का 50% हिस्सा संभालना है। शिपिंग सचिव टीके रामचंद्रन ने कहा, यह कॉरिडोर वैश्विक समुद्री सततता का ब्लूप्रिंट है। संयुक्त सचिव आर लक्ष्मण ने बताया, एलओआई
एक जीवंत दस्तावेज है जिसे औपचारिक समझौते में बदला जाएगा। JNPA और तुआस पोर्ट के बीच पायलट प्रोजेक्ट्स की योजना है। JNPA चेयरपर्सन उमेश वाघ ने कहा, हम हरित अवसंरचना और डिजिटल प्रणालियों में निवेश कर रहे हैं। BN सिटी फेज 2 और NSFT के साथ हमारी क्षमता 10.4 मिलियन TEU से अधिक हो जाएगी। उन्होंने वधावन पोर्ट को भारत की समुद्री दिशा का अगला स्तंभ बताया है। मैरीटाइम वीक के दौरान JNPA एक ग्रीन शिपिंग इनोवेशन की मेजबानी करेगा, जिसमें भारत सिंगापुर की संयुक्त तकनीकियों को प्रदर्शित होगी और मजबूती मिलेगी। Excellencies, Shri Devendra Fadnavis, Chief Minister of Maharashtra, distinguished guests, ladies and gentlemen, thank you very much for hosting Deputy Prime Minister Gan Kim-yong and I for today's event. Very happy to be here at the Indian Maritime Week, and of course for the opportunity to speak to all of you at the Leaders Dialogue. Deputy Prime Minister and I were at the PSA Bharat Mumbai Container Terminal just this morning, I think, yes. We just flew in today, so a little bit confused about the time. But as you saw in the video, it's a remarkable development, remarkable achievement. It is something that was planned a very long time ago, and I was sharing with the Chief Minister that it takes a government of remarkable foresight, leadership, in order to be able to achieve a project of this scale and immensity today. In fact, Chief Minister had laid the first foundation stone for the terminal in the year 2013. And for it to be what it is today shows the remarkable energy, the dedication to making things happen through COVID, through a pandemic, if we all remember. So we were very happy to be there, to be able to see the project come to completion. And in fact, the first stage of the growth, the key cranes will be coming, and soon the operations will be ongoing. And we were very happy, of course, to have a Singapore company like PSA International to work with Indian counterparts to achieve this mutual success. We have in fact seen many joint ventures and partnerships between PSA as well as the Container Corporation of India just last year to provide end-to-end logistics services. Likewise, there have been many Indian companies such as Tata Group and Tolani that have ventured into Singapore to explore opportunities in the region. And there's many more that we can talk about. Specifically on the transport front, we have deep, long-standing relations. As my colleague from the Ministry of Ports and Shipping and Waterways said just now, India and Singapore share a very deep maritime history. And as a result, we have been working on many projects in the maritime sector. Our governments have been working closely, both bilaterally and at multilateral platforms such as the International Maritime Organization. And this year is a very important and significant year for us because we are enhancing our collaboration through signing a memorandum of understanding on the Singapore-India Green and Digital Shipping Corridor. It's a not so nice short form, GDSC MOU, but it stands for the Singapore-India Green and Digital Shipping Corridor. And under this MOU, both countries will work closely with interested industry partners to explore opportunities to develop supply chains for low emissions maritime fuels. And this would include training requirements for seafarers to handle such fuels. Both countries will also explore facilitating digital information exchange, which will enable more efficient port clearance and facilitate the flow of vessels between Singapore and India. This collaboration builds on the synergies between India and Singapore. India, as we all know, is a leading player in many things, but especially in information technology. And India has been working on becoming a major producer and exporter of green marine fuel. Singapore is well positioned
Not as big as India, but we are positioned to be the world's largest bunkering and transshipment port with a dynamic research and innovation ecosystem in green marine fuel. And I'm confident that both India and Singapore will complement each other, and both the businesses and startups in both countries will prosper together. Since signing the letter of intent in April this year during the Singapore Maritime Week, officials from both India and Singapore governments have been working tirelessly on this MOU, and I look forward to the conclusion of this MOU by both our Prime Ministers in September this year when they meet. The MOU gives us a platform for both countries to work closely together. There will be more to come. Singapore looks forward to further cooperation with India in the areas of transport, maritime, and of course that will serve as the foundation for economic development and people-to-people ties. Thank you very much. Namaskar. Good afternoon to everybody. Respected Gan Kim Yang, Honorable Deputy Prime Minister of Singapore, respected Sri Devendra Fadnavis ji, Honorable Chief Minister of Maharashtra, respected Jeffrey Seo, Acting Transport Minister of Singapore, it is a great honor and privilege to welcome His Excellency the Deputy Prime Minister of Singapore and his delegation to Jawaharlal Nehru Port Authority, India's premier container port. Your presence today at JNPA reflect the vibrancy of our partnership and the deep and enduring commitment between our two nations. I extend to you a very warm welcome on behalf of the Ministry of Port Shipping Waterways and the people of India. I also heartfully welcome the dynamic and visionary Chief Minister of Maharashtra for joining us at the Leaders' Dialogue at JNPA. Much as I would have loved to join the distinguished gathering today, unfortunately, due to an unavoidable parliamentary exigency, I am unable to be with you. The change of plan is deeply regretted. I am certain that the address today from our distinguished dignitaries will be enlightening for our many international delegates, business leaders, entrepreneurs, policymakers, and media friends. Dear delegates, India and Singapore share a strong and multifaceted partnership rooted in mutual respect, shared values, and a common vision for prosperity. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, our bilateral relations have expanded across sectors. Connectivity forms an important pillar of this bilateral partnership. I had the privilege of visiting Singapore myself earlier this year for the Singapore Maritime Week, an enriching opportunity to engage with global maritime leaders and reaffirm our shared commitment to sustainable growth. I would like to take this opportunity to acknowledge and appreciate PSA International investment in Bharat Mumbai Container Terminals. At JNPA, BMCT exemplifies our shared vision to build modern, world-class port infrastructure. It is an example of reform-led growth model that India pursues and reflects the confidence that global partners like Singapore place in India's economic resilience and growth potential. Building on the partnership, earlier this year, India and Singapore signed a letter of intent to establish a green and digital shipping corridor.
This initiative will accelerate the adoption of low emission technologies, strengthen digital integration, and drive innovation in maritime operation. You can truly see the magic of skill and scale once the corridor develops. The Government of India is fully committed to facilitating long-term foreign investment in maritime and logistics sector. Our pro-investment policies anchored in PM Gati Shakti and the National Logistic Policy are designed to create seamless multimodal connectivity, reduce logistic cost, and improve ease of doing business. I invite our Singaporean partners to explore new opportunities in India's growing logistic and port ecosystem. The time is ripe for deeper collaboration. I would also like to take this opportunity to extend a warm invitation to His Excellency, the Deputy Prime Minister, and his delegation for the inaugural ceremony of India Maritime Week 2025, which will be held in Mumbai from October 27, 2025. This prestigious event in one of the most important maritime capitals of the world will bring together key stakeholders from the global maritime community to discuss and explore opportunities for collaboration, innovation, and growth in the sector. Your esteemed presence would be an honor and a significant contribution to strengthening maritime ties between India and Singapore. Once again, I express my sincere gratitude to Deputy Prime Minister Gan, Minister Jeffrey Seo, visiting delegates from Singapore, and the PSA Group for your commitment to India. We deeply value this partnership and will extend all possible support to ensure your continued success. I also thank the Honorable Chief Minister of Maharashtra for giving strength to our program today with his presence, and for the deep partnership between Government of India and Government of Maharashtra towards realizing the vision of Maritime Amrit Kal Vision 2047. Thank you. Jai Hind. Honorable Deputy Prime Minister of Singapore, Mr. Gan Kim Yong, Honorable Minister of Transport, Singapore, Mr. Jeffrey Seo, Mr. T.K. Ramachandran, Secretary Ports, Government of India, Mr. Unmesh Wagh, Chairman JNPA, Mr. Lakshmanan, Joint Secretary Ports, all the dignitaries present here, dear friends. At the very outset, I would like to welcome His Excellency the Deputy Prime Minister of Singapore and the entire delegation to this beautiful city of Mumbai, which is a financial, commercial, and entertainment capital of India. And I'm sure that your visit will deepen the ties between India and Singapore, and also Maharashtra and Singapore. This morning, after His Excellency's arrival, we visited the new PSA terminal at JNPA, and I must thank the PSA and also the Government of Singapore
for creating such a state-of-art terminal, which is now totally ready for inauguration, and I'm sure that soon we will witness both the Prime Ministers inaugurating this beautiful terminal, which will add to the maritime power of India. As we all know that now this terminal will account for 50% of the container handling capacity of JNPA, and that will bring a boost to the global trade of India. Having said that, I'm very happy that today India and Singapore are collaborating in diverse fields, in the field of maritime trade, maritime infrastructure, in the field of digitization, in the field of data center, in the field of logistics. We just witnessed one such MOU with the maple tree, and after this program, in another program, we are again will be witnessing few more such MOUs. And I think this is not only bringing the two economies closer, but it is also opening doors for many more such collaborations in future. And today, as we are deliberating on green and digital maritime corridors, I think this collaboration is very important to create this entire ecosystem of green and digital maritime corridor. All of us know that India also has a very rich maritime history, and we all know that the Chol Empire was world maritime power at that time. And we have also seen in the world history that the world trade is always dominated by the maritime superpowers. And that is why the entire maritime business is very important. In fact, all of us know that Chhatrapati Shivaji Maharaj, the great king from Maharashtra, the great king of India, was one who understood the power of maritime business and maritime security. And today, the entire western coast, which we see where the JNPA port is also situated, is safe and is ready for business only because of the vision of our King Chhatrapati Shivaji Maharaj. And I would say that in the 21st century, it is our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who has understood that for India's growth, the maritime infrastructure will be very important, and he spearheaded this entire maritime revolution in India by creating the Amrutkal Maritime Vision 2047. Our Prime Minister aims to make India one of the biggest player in the maritime space. And aligned to his vision, the government of Maharashtra has also planned many initiatives to actually be part of this Amrutkal vision. We are also creating a maritime vision for the state of Maharashtra, whereby the immediate
vision document will be our goals up to 2029. Our intermediate goals will be up to 2035 and then ultimately up to 2047. And I'm sure that in days to come, Maharashtra will play pivotal role in this entire reshaping of the maritime infrastructure and maritime ecosystem in India. I'm very happy that now we are also building the Vadhavan port, which will be not just India's biggest port, but which will be one amongst the 10 big ports of the world from the day one. I'm very happy that the chairman JNPA port has promised us that the building of this port will be achieved in time. I think this port is actually, it will take Maharashtra and India to another league, and it will make us a maritime superpower. But as we rightly say that in today's world, what matters most is sustainability and efficiency. And I think in the maritime sector also, now that we are focusing more on sustainability, like creating green corridors, like creating new efficient fuels, and India is also leading the way. Along with Singapore, we have already charted MOU, and both the countries will collaborate with each other for creating new green corridors, for exchanging the new technologies, for exporting the green fuel technologies. And I'm sure that it will be beneficial for both the countries. And today, India has grown its digital infrastructure many-fold. And I think the initiatives like e-Samudra, where lot of digitization has gone into the maritime services, it is also creating efficiencies in the entire maritime trade. I think all the initiatives which are taken up by the Government of India in the maritime sector, especially to use all the digital technologies, will bring a lot of efficiencies and will also create India's new supply chains for the world. And I'm sure in this entire journey, we have the Government of Singapore as our most trusted friend. And that's why I would like to thank the Honorable Deputy Prime Minister and the Honorable Minister for being our partners. And I feel that this partnership will not just be restricted at the JNPA, but it will also be taken forward to the Vadhavan port, where we'll again create a very efficient terminal and will witness one more MOU in this sector. I would like to thank our Ministry of Shipping, the JNPA port, and all the authorities for organizing this dialogue. And once again, from Government of Maharashtra, and also from my friend and the Union Minister, Shri Sarbanand Sonowal ji, who could not come here, I would once again like to welcome you. I hope that your trip will be very fruitful. Thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra. Excellencies, Sri Devendra Fadnavis, Chief Minister of Maharashtra, Mr. Gobu Salaya, Director of PSA, Managing Director of PSA India, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon to all of you. First, let me thank you for inviting me to the India Maritime Week. This is a very important event, and today's topic is also very relevant on the green and digital maritime corridors. As all of us know, we are facing a fundamental existential challenge of a climate change. And this climate change is a global challenge, and it requires collective effort from everyone to contribute towards a more sustainable future. At the same time, digitalization is also another mega trend that's changing the world,
with the advent of digitalization and now with AI and even Gen AI, I think this will become a key tool to allow companies and enterprises to transform and transit towards a more sustainable future, but also allow them to be more efficient, more productive, more competitive. So I think green and digital maritime corridors are very important, and all of us must do our part to transit towards a more sustainable future. And in this regard, Singapore and India are working on a MOU on developing a green and digital shipping corridor. I think this is our contribution towards a more sustainable maritime sector. And PSA is in a leadership position in charting the path forward for a more sustainable shipping industry. It is my pleasure this morning to visit PSA's newly completed Bharat Mumbai Container Terminal Phase 2. This investment is a very significant investment, but it is also a testament to the strong and enduring partnership between PSA Group and India, and between India and Singapore. As you know, we are celebrating or marking our 60th anniversary of bilateral diplomatic relationship between Singapore and India. And thank you. And this investment, as well as many other investments that we have made in India, reflects these strong ties between India and Singapore. And we hope we will continue to grow this partnership. Phase 1 of the project is a good demonstration of how world-class port operations can benefit India by enhancing efficiency, reducing turnaround time, and boosting competitiveness for India's exporters and importers. Phase 2 builds on this success and doubles the capacity of the terminal to 2.4 million TEUs from 2.4 million TEUs to 4.8 million TEUs. This will make BMCT the largest standalone container terminal in India. This terminal also represents a new milestone in PSA's journey in India. Over almost 3 decades, PSA has invested a total of $2.3 billion in India, of which more than half is in BMCT. The success of BMCT demonstrates how Singapore companies can contribute to India's growth and development. Especially at a time of significant volatility in the global trading environment, ports like BMCT play a critical role in keeping trade flowing and economies growing. This expansion will not only boost regional trade, but also create significant employment opportunities for the local population. As Singapore and India celebrates our 60 years of bilateral relations, there is room for us to do more in strengthening and deepening our collaboration, particularly in the maritime sector. Indeed, maritime connectivity is a key focus under the connectivity pillar of the India-Singapore Ministerial Roundtable. Besides port operations, Singapore companies have been active across India's maritime landscape in areas such as shipbuilding, renewable energy, and green shipping solutions. Through the ISMR, we seek to find new avenues to deepen our partnership further. For example, as I mentioned, both Singapore and India are working on the MOU to develop a green and digital shipping corridor. This will in turn accelerate the shift of our maritime sector towards greener solutions and smarter routing. Beyond our maritime and connectivity sectors, Singapore and India share deep and broad economic ties across many areas. Our comprehensive economic cooperation agreement, signed almost 2 decades ago, laid a foundation for growing trade and investment flows between our two countries. Today, Singapore is one of India's largest source of foreign direct investment. In particular, there are many Singapore companies in Maharashtra across different sectors such as infrastructure and urban solutions, logistics and connectivity, banking and finance, as well as consumer services. I'm very happy to note that the MOU that have just been signed and exchanged
between Maple Tree Investments and the government of Maharashtra in industrial and logistics and warehousing development. These will further strengthen the network of win-win partnerships between Singapore and Maharashtra. And once again, I would like to congratulate PSA, our Indian partners, and the tireless port workers who have enabled BMCT to become the success it is today. I'm confident that Phase 2 will enable BMCT to further enhance India's maritime connectivity and contribute to the growth and prosperity of India's businesses and workers in the decades to come. Thank you. Countries who release the annual booklet about the tariff and everything according to the port laws. So India is also planning to release that kind of booklet for the tariff, because tariff is the really trending topic in these days in India. Schedule of rates. So it's already there. The tariff is already released upfront. We already do that on our website, and now we have come up with what is called a standard template for the schedule of rates, so that all the ports follow a common template. So people don't have a problem when they move from one port to the other, trying to understand different types of templates. So we've prescribed a common template. Just to congratulations to all of you all for the bill passing, 5 bills passed. But I wanted to know, sir, this leader dialogue on green and digital maritime, the seminar or the discussion we had, what do you think was the takeaway for the ministry from this discussion about leadership dialogue? So one of the key things is international partnerships, international cooperation. So this, I think, would be one of the key takeaways, as we heard from the speakers in the morning panel discussion, where we saw examples from other parts of the world, what DP World had quoted, or the Port of Rotterdam had explained. So that would be one key takeaway, and also to build the right infrastructure in terms of the participating countries. And another key thing would be the establishment of digital infrastructure where information flow can happen seamlessly. And another would be governance and the regulatory agencies collaborating and aligning. So these 4 things, I think, would be the key aspects that we would we need to work on if we have to really ground these corridors. Thank you. Thank you everyone. जहाँ तक सवाल है JNPA और वाधवन के डीप का, अपने क्षेत्र में, अपने पूरे देश में कसं आहे की they want to ask, we want to ask the deep draft port, how many you have in the India? So कसं आहे की जे बल्क पोर्ट आहे ते आपल्याकडे 20 पेक्षा जास्त खोलीचे आहेत. पारादीप आहे, कांडलामध्ये पण मिळून जाते. विजिंगजम जो पोर्ट आहे तो ट्रान्सशिपमेंट पोर्ट आहे, त्यालाही खोली 18 पेक्षा जास्त आहे. परंतु कंटेनर पोर्ट ज्याला 18 मीटरपेक्षा जास्त खोली लागेल, कारण त्याच्यापेक्षा जास्त खोलीची गरज लागत नाही, कारण की त्याच्यापेक्षा जास्त खोलीचे आता शिप्स बनत नाही, वाईड बनत आहेत. तशी जी खोली आहे ती आपल्या भारतात किनाऱ्याजवळ फार कमी आहे, ती वाढवणलाच आहे आणि वाढवणच्या आसपास 5 ठिकाणी आहे. त्याच्यात बेस्ट वाढवणला आहे, त्याच्यामुळे आपण तो वाढवण निवडला आहे. तसेच आता एक प्लॅन जो गलाथिया बी आहे त्या अंदमान निकोबारमध्ये, तिथे सुद्धा आता ईस्टला वेस्टला एक झाला ट्रान्सशिपमेंट पोर्ट, म्हणजे जो विजिंजम. आता ईस्टला तसाच ट्रान्सशिपमेंट पोर्ट व्हावा म्हणून गलाथिया पोर्ट जो पोर्ट आहे तो बनतोय. तर त्याचा पण तो 14वा मेजर पोर्ट झाला आहे, जसा वाढवण 13वा.
Thank you everyone for your valuable time and presence and making this event successful. Thank you once again. And mega ports, then green shipping and poor green ports, digitalization and so on. And during the last Global Maritime India Summit, almost 10 lakh worth crores of MOUs were signed, a lot of investments were made, and several countries, more than 50 countries participated. So this gave a fillip to this ministry over the last couple of years to work really hard at translating the vision into reality. And I'm glad to tell you that several things have happened in the last 2 years, and some of which I will highlight, some of which you might already know. And like you know, for instance, as far as ports are concerned, we have the Vadavan port, which was for which the foundation stone was laid by the Honorable Prime Minister last year. And काम बहुत जल्दी चल रहा है, and hopefully in another few years, I think 28 is the date being looked at. So that port will add 300 million tons of annual capacity, maybe 10th large, among the 10th large ports in the world, and will double our container handling capacity from 22 million TEUs to about 45 million or so. So this is just one example. Similarly, I have the happy news that while we were in this session this afternoon, the Lok Sabha has passed the Indian Ports Bill. So that was the final of the 5 bills that we were spearheading during this session of the Parliament. So the Merchant Shipping Bill, the Indian Ports Bill, the Coastal Shipping Bill, the Carriage of Goods by Sea Bill, and of course the Bills of Lading Bill. तो 5 bills जो है इस लोकसभा और राज्यसभा में हम लोगों ने पास किया. So among the 13 bills, this was the highest, the ministry with the highest number of bills, and it's a landmark event in the history of the ministry. So of course we are thankful to all those who made this possible. But this is just one example of the kind of transformation that is taking place in the shipping sector, shipping, ports and maritime sector. And the other thing is, of course, the other pillars, apart from the port sector, where I just spoke about the legal reforms, there are institutions that have been created for the benefit of the growth of the sector. And that includes, apart from new ports, it includes centers of excellence across the country in digital, in green, in international cooperation, and in inland waterways. And the latest is one on digitalization. So these are centers of excellence which have been set up. New organizations like the Indian Ports and Ropays Corporation Limited, IPRCL, has been created. The IPGL to run our ports in other countries like Myanmar or Iran has been created. And several fora like the Maritime, the States Development Council, the Inland Waterways Development Council, etc. have been created so that it fosters more of interaction between states, both maritime states as well as waterway states. Similarly, on the as far as growth is concerned, from about 2,600 million tons, from about 1,600 million tons 10 years back, now we are at about 2,700 million tons of capacity, which makes us one of the biggest, largest shipping countries in the world, cargo, in terms of cargo capacity. Cargo also has increased from about 800 million tons per annum to about 1,600 million tons. So everywhere, so port sector there is growth, coastal shipping there is growth, inland waterways, it just used to be about 18 million tons a few years in 2014. Now it is 145 million tons. So inland waterways पे भी काफी growth हुआ है. And then finally, the shipping sector. Shipping sector में these, apart from these landmark legislations, we have had several other important announcements which took place in the last budget. जो बजट जनवरी में पेश किया गया, उसमें there was the 3 schemes which were announced. The first was the Maritime Development Fund at 25,000 crores. The second was the Shipbuilding Financial Assistance Scheme 2.0. And the third was the cluster, maritime clusters and shipbuilding clusters in the country.
apart from declaring shipping as an infrastructure, which will lead to greater assistance to this sector. So these again are things that have been long sought by the industry, maybe decades, and finally these have happened, and again it augurs well for the sector. So in this context, it is in this context that we are holding the GMIS after 2 years, and which better place to hold it than Mumbai? All of you are Mumbaikars, so Mumbai is the center capital. And which other port to speak about it than JNPA, being one of the leading ports or the leader. यहाँ लिखा है India's best performing port, ताकि हम भूल ना पाएं कि इनका port best performing port है, सच में है. तो we are sitting here on the stage in the best performing port and talking about the GMIS in a city which is the biggest, grandest city of India. And this forum, the GMIS, is going to be a forum where people from across the world, we are expecting people, around 1 lakh attendees. There will be exhibitions, there will be huge number of stalls, there will be a lot of discussions, networking, sessions, and it is going to be an India Maritime Week. It is not a Global Maritime India Summit, will be just 2-3 days, but the India Maritime Week एक पूरा सप्ताह चलेगा, like Singapore Maritime Week, London में होता है, some other places होता है. So the idea was that over this week we have several events, including the Sagar Manthan, which is a policy dialogue, and then we have what are the other conferences? Green Maritime, Digital Maritime, काफी conferences. Corridors will happen around during this week. So our idea is to launch, and we are also thankful to the government of Maharashtra for having agreed to host this event here and for having agreed to be partner state, host state for this event. And they have given us a lot of help. I'd like to on this occasion thank them and for the excellent support and cooperation that they've given us. So these are broadly things that have happened in the shipping, ports and waterway sector and about the GMIS. More details if you want we can add. I think broadly this is about it. Okay, thank you. So we can take few questions. Can we have the mic in the audience? Can we have the mic in the front row? Can we have the mic in the front row here, please? Has the pace of port monetization slowed down because not many projects are now coming on stream for tender and all that? Is that correct? No, it's not correct because actually with 80,000 crores worth of monetization happening, so that's also PPP, right? Whatever. That has not yet come on stream, but no, it's happening. So the ham is going ahead full steam, and we have I think approved almost 10 or 12 projects in the last 6 months. So across the ports, ham is PPP is happening. Berth mechanization and currently, sir, just to add, I think we should be having, apart from Vadhavan, more than close to 20,000 crores worth of PPP projects which are currently in different stages of tendering. And with the new budget announcement, we are working with DA also. Like we have submitted a pipeline of PPP projects close to 1 lakh crores over the next 4 years. So there's a robust pipeline. The way it has been happening, I think it will gain more momentum. Actually, gain more momentum is the word I would use. Yeah. What about that? I was asking, there is this issue about migration of existing terminal operators to the new market-based regime. Any visibility on that? Yes, it is in final stages of deliberation, and so we are expecting to see something happen within the next 1 month. Okay, any other questions from here? Yeah.
this is Snehal from ANI. So this bill will replace 117 years old Port Act, if I'm not wrong. Then what innovations will we get to know, and what we can witness in this bill? So the new bill, which is currently passed by Lok Sabha, which will now go to Rajya Sabha, primarily we are looking at an integrated long-term port development. So that is the primary thrust of the new bill. It's a concurrent subject, so where central government and state government have to work together. So this bill brings in that framework where there is a possibility of a cooperative and a collaborative development. And other alignment with the international conventions, the MARPOL convention, which is on pollution, and there is a ballast water convention. So this bill brings in the legal provisions that are required for aligning our ports with these legal conventions in terms of the environment safeguards and preparations that are needed. And it also aligns with the FAL convention, which talks about maritime single window. So this new bill will put in place a framework where all the ports work in that maritime single window. Similarly, there are provisions related to Maritime State Development Council and also recognition of the existing state maritime boards legally, and also giving them a set of basic responsibilities and duties. And it also talks about transparency in tariff, so that the user is aware of what is the port tariff. It also talks about emergency preparedness in the ports, safety and security of ports. So it covers whatever are the latest best practices in the legal framework of managing ports and administering ports. So all of that has been brought in this new bill. There is no tariff authority. There is no tariff authority, but it talks about the framework for tariff and the boards which are empowered to fix tariff, and it also talks about publication of the tariff so that there is transparency. Basically, transparency. Talks about transparency, the need to spell it out upfront. Yeah. So basically, it's a corridor. So what we have found is that in the green, sector, you can't have development happening in one port or in one corner of the world without it leading to a corridor where both sides are, engaged in the same activity. So you can't have a green corridor unless someone else also does a green, corridor. I mean, green port. So that's why you have to have a green corridor. So they are interested because they are, of course, like us, they are also deficient in, carbon fuels. So we have therefore common interests. And they are a good consumer nation, but they don't have, for example, land to do solar. We have enough land. So, and they are very interested in converting to carbon neutrality. And we can help them do that. Therefore, this corridor makes sense. That is the green one. And the digital, because we think that operations across corridors, green digital corridors, if they are put in place, then it enhances efficiencies. So like we've done already one with Dubai, the western digital corridor. Similarly on the east. That is the idea. On the which project? On the digital processes. Digital, for instance, you see, there are customs processes, there is exchange of information, exchange of data relating to the cargo, the goods, the ships, the arrival times, etc. So you have a common platform and you share information, and again that does not have to be filed at the other end. It can be taken from this common platform. So that is example. That's an example. Yeah. Can we have last one question, sir, as a flight to catch? Hi, sir, I just want to know when the Wagwan project port will start. The work of Wardwan Port already started. And project-wise, the project, the timeline is 5 years. So in 2029, first quarter, the first ship will call on. And you have there is mention on the glass some about JNPT. So what you will give tag when Wagwan Port will come? What? The tag you said that JNPT, you just read the thing. The best. Yeah. So it will also be the best performing.
like No, it will beat JNPA and become the better performing port. Because at that time with two ahead of what that will call like. See, I mean, that port will definitely have some advantages than JNPA. Because it is an old port now, because 89 also it is the 36 years. Now it is inside city. So there are some challenges in evacuation and other things. That will not be there